Hi friends, welcome to our channel. So yesterday I have seen the latest syllabus, means new syllabus of the GTU of this subject. Okay, so after seeing that, I I know that the topics of second chapter, most of the second chapter topics was covered in the first chapter. So the latest syllabus was there, nothing much changes, but some topics of the chapter was changed, and chapter name was changed, and chapter number was also changed. So uh, don't panic. I don't worry. I will cover all the topics as per the your GTU syllabus. Okay, nothing worry about that. And if you any doubts and uh, not able to understand, then call me and feedback me my lecture and whatever you like. Okay, and the new the textbook according to new syllabus is available, will available in our library after some days, after some times. Okay, so you have to uh, prepare on the according your these video lectures, and don't worry about that. Okay, so the topic in starting, uh, after the topic of classification of instruments, that topic was covered. Okay, so essential requirement of indicating instruments. So indicating instruments की requirement क्या है, तो उसको in that three types of torque are there: deflecting torque, controlling torque, and damping torque or restoring torque. Okay, so what is that kinds of torque, we will discuss in this video lecture. Okay, so first one is deflecting torque. So what is deflecting torque? So the deflecting torque causes the moving system and pointer of instrument to move from its zero position. Means हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो लगाते हैं, वो क्वांटिटी जो मेजर करता है उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर है वो जीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पोजीशन में होता है पॉइंटर. ठीक है, फिर कोई भी जीरो पोजीशन में से वो मेजर्ड क्वांटिटी तक पहुंचता है पॉइंटर, उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करते हैं. ठीक है, so production of deflecting torque depends upon the type of indicating instrument and its principle of the operation. Okay, so the deflecting torque moves the pointer on a calibrated scale. Okay, so this torque is proportional to quantity under measured. Okay, so it is produced by using various effect of electric current such as magnetic effect, heating effect, okay, thermal effect, electrostatic effect, electromagnetic effect, Hall effect, induction effect. Okay, so I hope you all know about that much effect. Means magnetic effect क्या होती है वो आपको शायद पता होगा. ठीक है, कि when current carrying conductor is kept in magnetic field, it exercises a force. Okay, मोटर में जो प्रिंसिपल होता है वो ही मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, फिर थर्मल इफेक्ट क्या है कि the quantity under measurement is passed through a small element which heats due to I square RT. ठीक है, I square RT जूल के लॉ. ओके, उसकी वजह से थर्मल इफेक्ट वर्क होती है. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या है, वो when two plates are charged, there is a force of attraction or repulsion on them. ओके, कोई भी, so वो क्या फोर्स के कितना होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर. Q क्या है, चार्ज है, और D मीन्स डिस्टेंस. ओके, फेराडेस लॉ की वजह से जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट. ठीक है, फिर फोर्थ इफेक्ट इंडक्शन इफेक्ट. ओके, इंडक्शन इफेक्ट मीन्स इंडक्शन मोटर में जो इफेक्ट होती है वो. ओके, सो what is induction effect? So when an aluminum disc or drum is placed in between the two electromagnets as so supplied by AC supply, then an EMF induced in the disc or the drum. Okay, so that is the induction effect. Or last effect is Hall effect. So what is Hall effect? So if a strip of conducting material carries current in the presence of transverse magnetic field, then an EMF is produced between two edges of the conductor. Okay, so I hope you all know about that kinds of effect, and they also discussed in
you passed a subject. Okay, so I'm not wasting time about that effects. Okay, so मैग्नेटिक इफेक्ट की एप्लीकेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? तो मैग्नेटिक इफेक्ट से कौन एमीटर, वोल्ट मीटर और वोट मीटर आ सकता है. So in heating effect, the application was that ammeter, voltmeter and wattmeters. Electrostatic effects was considered in voltmeter. Okay, so induction effect is ammeter, voltmeter, wattmeter, energy meter also in the induction effect, and in the Hall effect, the flux meter, Pintic vector wattmeter is considered in the Hall effect instrument. Okay, all of you understand? You are getting my point of the deflecting torque. Okay, so next torque is controlling torque. Okay, so what is controlling torque? So controlling torque limits the movement of pointer and ensures that the magnitude of deflection is unique and is always same for the given value of electrical quantity to be measured. Okay, so function of controlling torque was that to stop the pointer at the correct position. ओके, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जो पॉइंटर मूव होता है, ठीक है, तो उसको हमें राइट पोजीशन में फिक्स करने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो है कंट्रोलिंग टॉर्क. ठीक है, फिर क्या वर्क होता है कि टू ब्रिंग द पॉइंटर बैक टू द जीरो पोजीशन व्हेन द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इज जीरो. मीन्स जब क्वांटिटी हम ले लेते हैं, क्वांटिटी मेजर करने के बाद वो हम क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट की इनपुट में से ले लेते हैं, फिर इनपुट तो जीरो हो गया, सो फिर हमें वापस जीरो पोजीशन में लाने के लिए भी कंट्रोलिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर एंड एक्ट्स इन अपोजिट in direction to the deflecting torque. Okay, so when certain quantity is applied to the measuring instrument, deflecting torque is produced. Okay, so magnitude of deflecting torque is directly proportional to the quantity under measurement. The pointer get deflect, so as soon as pointer get deflected, controlling torque is produced and its magnitude goes on increasing as the deflecting torque of pointer increasing. Okay, so when controlling torque is equal to deflecting torque, the pointer becomes stationary and shows the steady reading. Okay, controlling torque और deflecting torque दोनों सेम होते हैं, फिर पॉइंटर है वो एग्जैक्ट पोजीशन में स्टेशनरी हो सकता है. ठीक है, उस कंट्रोलिंग टॉर्क टू मेथड से कर सकते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड एंड ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. ओके, सो व्हाट इज स्प्रिंग एंड ग्रेविटी कंट्रोल? So in spring control method, two phosphor bronze hairspring of spiral shapes are attached to the spindle of the moving system of instrument. Okay, ये दो स्प्रिंग है, स्पिंडल से ठीक है. सो दे आर बाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, सो पॉइंटर इज अटैच टू बी स्पिंडल ऑफ दिस मूविंग सिस्टम. ओके, स्पिंडल है और पॉइंटर है, मूविंग सिस्टम. ठीक है, इसका वर्किंग क्या है कि व्हेन द मूविंग सिस्टम डिफ्लेक्टेड, वन स्प्रिंग गेट्स वाउंडेड एंड अदर गेट्स अनवाउंडेड. ओके, जब मूविंग सिस्टम डिफ्लेक्ट होगी तो एक है वो वाउंड होगी, एक अनवाउंड होगी. ठीक है, सो दिस रिजल्ट इज कंट्रोलिंग टॉर्क whose मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ओके, कि जितना एंगल डिफ्लेक्ट होगा उतनी ही ये स्प्रिंग है वो अनवाउंड स्प्रिंग है वो कंट्रोलिंग, वो उस पे ऊपर टॉर्क लगेगा. ठीक है, सो TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट एंड deflecting torque is directly proportional to the current and controlling torque is directly proportional to the deflecting angle. ठीक है, deflecting angle theta. So at final steady state, TD is equal to TC, means deflecting torque is equal to controlling torque. Okay, so deflection is directly proportional to the current and hence scale is the linear scale. Okay, I hope you all are understand whatever I say. Okay, सो इसके एडवांटेज क्या है कि स्केल है वो यूनिफॉर्म मिल सकता है. द स्प्रिंग कंट्रोल मीटर्स कैन बी यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल पोजीशन. ठीक है, सो कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी एडजस्टेड इजीली इन दिस मेथड. ओके, डिसएडवांटेज ये है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट द स्प्रिंग लेंथ एंड हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंट्रोलिंग टॉर्क इज चेंज. ओके, so accidental stress in the spring may damage them and spring may be get
permanent set if stressed beyond their elastic limit. ओके, सो स्प्रिंग की वजह से एरर मिल सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। सो इन दैट मेथड, in gravity control method, a small weight is attached to the spindle of the moving system. Okay, small weight, control weight है वो हम लगाते हैं, ठीक है। due to the gravitational pull, a control torque acting in opposite direction to the deflecting torque is produced. Okay, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो वेन एवर द पॉइंटर टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। ओके, so in this deflecting torque is directly proportional to current, and TC means controlling torque is directly proportional to the sine of the deflection angle, means sin theta. okay, जितना एंगल डिफ्लेक्ट होगा मीन्स यहाँ थीटा, तो उसका साइनोसोडियल वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। सो sign of the deflection is directly proportional to current, and scale is the non-linear. Okay, in gravity control method scale is the non-linear. Okay, so control weight क्या है कि in this type of a small weight is placed on arm attached, the position of this weight is adjustable. Okay, और बैलेंस वेट भी हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। ये बैलेंस वेट है और ये कंट्रोल वेट है, ठीक है। तो दोनों की वजह से जो भी स्पिंडल है वो, सॉरी पॉइंटर है वो स्केल में डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो इसके एडवांटेज क्या है कि द मैन्युफैक्चर कॉस्ट इज लेस एज कम्पेयर टू द स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। इट इज अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर वेरिएशन, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन की कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी चेंज इजीली बाय चेंजिंग एल, मीन्स लेंथ की लेंथ हम चेंज करने से वो ठीक हो जाती, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि एज द कंट्रोल टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटी कंपोनेंट, इट कैन नॉट बी यूज वर्टिकल पोजीशन, इसमें हम वर्टिकल पोजीशन में ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो कंट्रोल वेट increases the weight of the moving system and hence decreases torque weight ratio of the meter, and the scale of the gravity control instrument is non uniform as I told. Okay, so that two are the method for the controlling torque. Okay, so next torque is damping torque. So what is damping torque and damping method, all are the discussed in the next video lecture. Okay, if you any doubt in controlling torque and deflecting torque, you can ask me. Okay, thank you.